Okay, it is 1:05 p.m. Let us start the class. Okay, sir. Let me present my screen first. Can you see the slides? Yes, sir. Okay. So myself and Shudipto Dev sir, we will take your design practice 1 lab and design practice 2 lab that we will take in the next semester. Fine. Okay. So let me tell you some important instructions related to this lab. If you have seen in your official WhatsApp group, yesterday I have posted one Google Classroom code. I hope you all might have joined that Google Classroom code. If not, please join it by today 12 p.m. Fine. Please join it by by today 12 a.m. So whatever lecture means whatever recorded lectures, whatever assignments will be there for this lab, design practice 1 lab, everything I will post in that Google Classroom for lab. There are two separate Google Classroom, one for theory and another one for lab. I will not mix the lab and theory Google Classroom together. So whatever things we will do in lab, whatever assignments I will give you, that I will post it separately in the Google Classroom, that design practice 1 lab Google Classroom, and whatever theoretical part we will be doing it, examinations, everything, whatever I will take, that I will do it in your theoretical Google Classroom. Fine. Okay, let me tell you what we will be doing it in this lab. We have divided this lab. This lab has been divided into two parts, part A and part B. Part A is your analysis part by the help of software. We will be using ANSYS for that to solve some analytical problems. Those problems already you have done either in engineering mechanics or you have done in strength of material parts. So here we will be learning by the help of that software how we are analyzing it. Fine. And in second part is the theoretical part. That means big design problems will be there. Fine. That part it will be taken by Shudipto Dev sir, and I will take care of this ANSYS part. So I think alternatively, we will take the class next week. I think I will not take the class next week. Shudipto Dev sir will take the class. Fine. And you have to do both the part, software part also as well as manual design part also. And how to means what will be the assignments and all those things that we will tell you once the class will proceed. In this ANSYS part, what you have to do is you see I will take some problems, I will solve it over here. I don't think you all are having every one of you is having that ANSYS software. Fine. So but Abhishek and Pritam Pine and Abhishek Chakravarti, they are having those softwares. So Abhishek and Pritam, you can kindly contact with your friends and you can either give them those softwares. Hello, Pritam. Sir, how to provide them the software because it is approximately 18 GB. Okay. Or any Sir, what I can do is I can make the screenshots of every step and make a PPT like that, and I can share that with them.
Okay, fine. No, that see, I will be sharing my lecture also. I will be giving my recorded lecture also. That is fine. But thing is We that can thing share is the that software on a Google Drive file. Google Drive. Yes, sir. Okay, Abhishek is telling that by Google in Google Drive file they can share. He can share because what I know is that that file is of 14 something GB. Is it correct? Sir, in Yes, sir. Google Drive, only 15 GB is allowed. Means, I think so. Yes, sir. There is only 15 GB. No Okay. more Sir, space. we can More than compress the 15. file also. But if you after compressing the file, will that NSYS will work in everybody's laptop? That is There the is a main high chance that the answers will not work because compressing the file, a software like that, it will not be profitable, sir. Okay, okay. Then till Yes, that sir. time, what we can do is that see, then you have to take a pen paper because how you will understand because I know I will solve it over here and I will show it to you, but you have to understand that okay, if I am clicking this icon, what will happen? If I am clicking that icon, what will happen? So better you write in your copy step by step process, and once the college reopens, then you have to submit me the hard copy of each and every assignment. I will tell you how to write that hard copy. Initially you have to write the question, then manually you have to calculate, manually you have to solve, then you have to match your manual calculation with this ANSYS software calculation. If any difference is there, what is the difference, how much is the difference, if difference is not there, why difference is not there. Understood? Hello. Yes, sir. Okay, okay, okay. So we will be starting with our first problem, and that problem is analysis of a truss. Do you know what is a truss? Hello. Yes, sir. What is a truss? What is a truss? Sir, truss is a structure that is used to transmit only the force, not the motion. We can say that railway bridge is an example of a truss. Can I say like that? Yes, sir. Yes, sir. Railway bridge is an example of a truss. Howrah bridge is an example of a truss. All the bridge which you can see, that is nothing but an example of a truss. That means if I show you by a schematic diagram how the truss will look like. Fine, this is a truss. I have to give a support to the truss, then only that truss will be stable in nature. For that support, what I will do is that at the two ends of the truss, I will give a support. Now we can give a lower roller support also. We can give a knife edge support also. Fine. So this is a truss. Truss can be of any shape. This is one shape. Then if you see this question, this is also an example of a truss. This is an open truss. This is an example of open truss. And the truss which I have drawn over here, it is an example of a closed truss. Fine. Okay. Now these things, this one, all these things are called members of truss. All these things are called members of a truss, and these points where the members are meeting, that means this is one point where this member and this member is meeting. This is the second point where this member and this member is meeting. Similarly, this is one point, this is another point, this is another point. These points are known as joints of truss.
These points are known as joints of truss. And then on this truss, what will happen is that you can apply some load, say load P1, load P2, and then on this member I can apply UDL also, as a result of which what will happen, the truss will deflect. So in our first experiment, by the help of ANSYS, we have to see that how much the truss is deflecting due to application of an external load. Either that load is applied to any member, or that load can be applied to a particular joint, or that load can be of UDL in nature, that load can be of UVL in nature. Fine. So how much it has been deflected? What is the then after that? If you draw the free body diagram of each joint, for example, if I draw the free body diagram of this joint, how I will draw? This is a joint. Now, since this is a member, this member will carry some force. I don't know the direction. Let us take that the direction of the force will be tensile in nature. If my answer is coming out to be negative, that means I have taken the wrong direction. My direction will be opposite. Similarly, this is one member. This member will again carry one force. This is that direction of force. That means this is the direction of force. And again, this horizontal member will have one force. Let us assume the force is like this. Similarly, this member is having some force. Let us assume that the direction of force is tensile in nature. That means for this particular, for this particular joint, this is the free body diagram. Similarly, you can draw the free body diagram of the remaining joints also. So we also need to find out, see, my main motive is what we need to find out. Due to the application of external load P, joint will deflect from its original position. How much the joint has deflected, that we need to find it out, as well as this fourth member will also deflect. That means this fourth member will exert some force. Every member will exert some force. What is the value of that force? That also we need to determine by the help of ANSYS. Is the problem clear? What is a truss? What is a member? What is a joint? Everything. Is the problem clear? कोई डाउट है किसी को? No, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay. So let us read the problem. What is the problem? Problem is a 4-bar truss is shown in the figure. Why it is 4 bar? This is bar number 1, this is bar number 2, this is bar number 3, and this is bar number 4. So that is why it is a 4-bar truss. Area of the cross section is 1 centimeter square. That means all the members are having common cross sectional area equal to 1 centimeter square. And modulus of elasticity E is equal to 2 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square. That means all the entire truss, that means all the members of the truss are made up of same material, whose E is equal to 2 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square. As it is a planar truss, 2D spar element link 1 is used for analysis. See, in ANSYS, if you want to draw or if you want to model a truss, we know that truss is made up of members. These are what? These are called members of truss, or sometimes they are also known as links of truss. Links. इसको आप member भी बोलते हो, इसको आप link भी बोलते हो. Fine. Now in ANSYS, see, many objects means you can draw 3D objects, you can draw 2D objects, you can draw 1D objects. But there are some specifications. For example, if you want to draw a 2D object, you can use some specific elements.
element A, element B, element C. Out of these three elements only, you have to choose any one element and you have to model your figure. Similarly, if you want to draw some if you want to model any three-dimensional drawing, then again in element there is a predefined that you have to choose element X, Y, Z. These X, Y, Z element only you have to choose for whenever you are going for three-dimensional analysis purposes. Likewise, for truss, in the question it has been mentioned to you that you have to use 2D spar element link 1. But the ANSYS version which I am having right now, that is 18th version of ANSYS, in that version this 2D spar element is not defined. So we will be using some other element to model this entire problem. Is it clear? कोई doubt है किसी को? No, sir. Okay. One real constant set and one material model are defined. Equivalent finite element model is shown in the figure. Okay. The joint displacement, reaction forces, member forces and stresses are determined. So in the question it has been told to you that using ANSYS you have to find out the joint displacement. That means A, B, C and D are the four joints. Due to application of load 1 kilonewton at joint C, how much A will be displaced, how much joint D will be displaced, how much joint B will be displaced, how much joint C will be displaced. That I need to find out, as well as I need to find out the reaction forces. That means since A and D are fixed, so joint A will exert a reaction RA in the positive Y direction as well as RX in the X direction. Similarly, joint D will be subjected to vertical reaction RDY in Y direction and RDX in X direction. What will be the direction? I don't know. If the answer is coming out to be negative, that means, for example, if I have assumed the direction towards positive y-axis and if my RDY is coming out to be negative, that means I have chosen the wrong direction. I have to change the direction. Fine. But if you see this diagram, in the question it has been told to me that I have to find out the joint displacement. By looking at this diagram, can anyone tell me what will be the joint displacement for joint A and joint D? Sir, 0. Correct. Joint displacement will be 0. But why 0? Sir, they are basically fixed with the ground. Yes, joint A and joint D is fixed. It's fixed with some support. How much load you apply, whether you apply at joint C or you apply at joint B, A and D will not move. A and D will not move. That means displacement of joint A and displacement of joint D is 0. How you found out? You found out from this problem. From the diagram you found out. Fine. That means you only need to calculate what will be the displacement of point B and what will be the displacement of point C. Okay. In ANSYS, see, ANSYS don't understand what is member, what is joint. ANSYS understands the concept of FEM, that is finite element method. ANSYS understands the concept of FEM, that is finite element method. And this I am teaching this subject in final semester. Fine. What is FEM? FEM means you need to divide your entire geometry into some finite number of elements. If I look at my question, can I say that my entire geometry is divided into 4 finite elements? One element is AB, another element is BD, third element is BC, and fourth element is CD. Can I say like that? Yes, sir. Okay. So now
we will not call AB, BC, CD as members. We will call it as element. See, in the second diagram, if you see the lowermost diagram, this is element E1, this is element E2, that means this element, this is element E4, that means this element, and this is element E3, that means this element. Also, FEM does not understand this A, B, C, D as joints. What FEM understands? FEM understands these A, B, C, D points as nodes. 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 That means if I see my second diagram or if I see my original diagram, I am having total 4 nodes. Node number 1, node 1, node 2. Oh, they have taken D as node 2. Okay, fine. Node 2, this is node 3, node 3. This is node 4, node 4. Now selection of node is up to you. You can take like this also. 1, 2, 3, 4. Or 1, 2, 3, 4. It is up to you. There is no hard and fast rule to select the nodes. That means ANSYS or FEM understands that for element E1, there are 2 nodes, 1 and 3. For element E2, there are 2 nodes, 2 and 3. For element E3, 3 and 4. For element E4, 2 and 4. That means FEM only understand about elements and node. Whatever structure you are drawing or you are modeling in ANSYS, you have to deal with only elements and nodes. That means I can say that each element will have a minimum of 2 nodes. Is the statement correct? I'm saying one statement. That statement is each element will have a minimum of 2 number of nodes, or else I cannot call that element as element. If that element is not having minimum 2 number of node, that is not an element. Is the statement correct? Yes, sir. Yes. Why? Because this is my element. Each and every element is having some initial position, is having some final position. Fine. If you say that any element is having only one node, if I say that element E1 is having only one node, that is node point 1. There is no other node. Not at all possible. That means your element is infinite. You cannot solve the problem. No element in this world is infinite. Every element in this world is finite. So remember one thing, every element should have a minimum of 2 number of nodes. You can also increase the number of nodes. Again, you can divide this element E1. Say, this is my element E1. This was node number 1. This was node number 2. In order to get more accurate result, you can divide this element E1 into 4 number of nodes also. 1, 2, 3, 4. Now you see, this is element E1. This is element E1 having 4 number of nodes. That means now if anyone asks you that tell me what is the behavior of element E1 due to application of this load 1 kilonewton, then you can say that I have divided my element into 4 possible nodes. I can tell you that okay, point 1 is moving, point 3 is not moving, point 4 is moving along x-axis by this much distance, point 2 is moving along y-axis by this much distance. That means more detailed information of the structure you can give if you divide your element into more number of nodes. Is it clear? Yes, sir. Okay. So for simplicity purposes, since you are just about to learn what is ANSYS, how ANSYS works, so we will keep it simple. We will not keep it complicated. So we have taken total 4 nodes: node 1, node 2, node 3, node 4. Fine. Now,
In ANSYS as well as FEM understands two type of coordinate system. One we call it as LCS. LCS is local coordinate system, and second one is GCS. GCS is global coordinate system. LCS local coordinate system, GCS global coordinate system. Now, if you see this figure, point A, B, C, and D are having some coordinate point. If you see point D is at a distance of 100 centimeter from A. If I take this as the reference coordinate, that means this A as the reference coordinate, that means this will be my y and this will be my x. Then coordinate of point D will be 100 comma 0. Similarly, coordinate of point B will be 50 in x and 50 in y, 50 comma 50. Fine. So in ANSYS, in order to model this problem, you have to first identify these points, nodal points A, B, C, and D, where they are located. That you can identify by applying these two coordinate systems. That is, either you can use LCS coordinate systems or you can use GCS coordinate systems. Now, what is LCS and what is a GCS coordinate system? Let us understand. Okay. Fine. So let me draw the truss first. That same truss I am drawing, which what is given in my question. Okay. Let us draw. That means it is like this. This end is fixed. Then fix. This end is also fixed. Then okay. Fine. And from here I have applied 1 kilonewton force. And the points are A, B, C, D. Okay. That means this is A, this is B, this is C, this is D. That means this is one nodal point, this is one nodal point, this is the third nodal point, and this is the fourth nodal point. Now I am defining what is LCS and what is GCS. If you are talking about GCS, that is Global Coordinate System, this is a common coordinate system for the entire problem. That means if I take this as my, if I take nodal point A as my origin, this is y, and this is my x. I have to define, or I have to give the coordinate values of nodal point B, D, C with respect to this origin point. That means common origin, common axis for each and every element of the problem. That is known as GCS. If I talk about what is an LCS, that is a local coordinate system. This means each and every element will have individual coordinate system. That means if I talk about AB element, say this is my x and this is my y. If for BC element, say this is my x and this is my y. For CD element, say this is my x and this is my y. That means if you are considering all the elements individually,
and you are taking a coordinate systems individually for all element and then making the calculations, that type of coordinate system is known as LCS, that is local coordinate systems. And if you are taking a common coordinate system for the entire problem, and accordingly if you are measuring the coordinate of the nodal points, you can say that you are solving the problem in GCS coordinate system. Is it clear difference between LCS and GCS? Yes, sir. Okay. So here I can use LCS also to solve the problem, but it will be little bit hectic in nature. So I don't want to make it hectic. Let us solve the entire problem in GCS. For that, what we will do is that we will take a common frame of reference, common axis. This is my X, this is my Y for the entire problem. Fine. Now, since you have fixed the axis, can you tell me the coordinate values of nodal point D, B, and C? Nodal point 1 coordinate value is 0, 0. Nodal point 2 coordinate value will be Sir, 100 into 0. 100, 0. Okay, let us write it over here. Nodal point 1 coordinate in x axis is 0 centimeter, y axis is 0. Nodal point 2 x is 100, y is 0. Nodal point 3 50, 50. yes, from x it is 50, from y it is 50. See, 3 is at a distance of 50 and 50. Next is nodal point 4. Sir, 200, comma 100. Okay, from here to here is 100 plus 100, x is 200 and y is 50 plus 50, 100. हाँ, x 200, y 100. Note it down. Clear? यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Okay. Next step is, this is manual calculation. This you have to do it manually. Fine. Next step is you have to prepare the element connectivity table. What is element connectivity table? You have to see that your element E1 is connecting from which node to which node. Your element number 3 is connecting from which node to which node. That is your element connectivity table. Can you tell me for element E1, what is the connectivity mapping? 1 and 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fine. See, that means starting node is 1, ending node is 3. I have taken the starting node as I and the ending node as J. Similarly, for element 2, element connectivity mapping. 2 and 3. Okay. So element 2, that means starting node is 2 and ending node is 3. See, 2 to 3. For element number 3, element number 3, 3 and 4. yes, that means starting node is 3 and the ending node is 4. 3 to 4. For element number 4, 2 to 4. 2 to 4. Element connectivity mapping is starting node is 2, ending node is 4. Done. Can we say 4 to 2? You can say 4 to 2, but if you are going serially from starting, go serially. If you are going say in reverse manner from starting, then go in reverse manner. Don't change the connectivity format. If you change the connectivity format, your calculations will differ. Okay, sir. Okay. So this is my element connectivity table. Next step is you have to tabulate the element attribute. What is element attribute? Attribute in ANSYS means specification of the element. The specification of the element means what is the cross-sectional area of the element? If the element is made up of steel, what is the value of modulus of elasticity of the element? What is the value of modulus of rigidity of the element if that element is a shaft, and so on.
So since in this problem all the elements are made up of same material whose E is 2 into 10 to the power Newton per centimeter square. So here I will write element 1, 2, 3, 4. Then second column Young's modulus or E for all the element is how much? 2 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square. And for all the element cross sectional area is 1 centimeter square. In the next problem which I will give you to solve, you will find that each and every element is made up of different material. Each and every element is having different cross-sectional area. Then how to solve the problem? Here everything is same, but in the next problem that we will solve or I will give you, fine, all the elements will be made up of different material. All the materials will have different cross-sectional area. There is a slight change in the algorithm of ANSYS that you have to understand. Where is that change? Then it will be easy for you to solve any kind of problems related to truss. Okay. Step 3 is done. What is step 4? Step 4 is you have to tabulate the boundary conditions given in the problem. There are total 2 boundary conditions given in the problem. If you see the diagram, one boundary condition is node 1 and node 2 is fixed. So displacement is 0. This is one boundary condition. And the second boundary condition given to you is at nodal point C, one force is acting, that is in negative y direction, and that value is 1 kilonewton. That means minus 1000 Newton. That also you have to tabulate. Let us tabulate. See, node 1 and 2 displacement. If I represent displacement by symbol U, then displacement along x-axis is also 0. Displacement along y-axis is also 0. Why? Because both we have fixed. X direction, y direction displacement both are fixed. And if I talk about node number 4, one load is acting in negative y direction, that is minus 1 kilonewton, that is minus 1000 Newton. This we call it as the complete summary of the problem. Now you have to look at this problem, accordingly you have to proceed in ANSYS. ठीक है, ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बोला, ये हर प्रॉब्लम के लिए आपको करना पड़ेगा. अब वो प्रॉब्लम बीम का बेंडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, शाफ्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, टॉर्शन का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. ये प्रोसेस कॉमन रहेगा ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में. ठीक है, कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. Okay. Now let us solve the given problem in ANSYS. For that, what I will do, I will tell you that please write it down, ठीक है? Because this algorithm is different for different types of problems. इसको आप याद नहीं कर सकते हो. आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर मैं इस टूल को क्लिक करूंगा तो इस टूल से एक कर्व शेप का ऑब्जेक्ट बनता है. उस टूल को क्लिक करूंगा तो उस टूल से मैं इरेज कर सकता हूँ. इस टूल को क्लिक करूंगा तो इस टूल से लोड लगा सकता हूँ बॉडी में. ठीक है, दैट विल डिफर फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. तो हमेशा जो एल्गोरिथम जो होगा वो हर प्रॉब्लम का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा. बट आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इसको क्लिक करने से क्या होता है या उसको उस आइकन को क्लिक करने से क्या होता है. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते रहो. ठीक है, तो आपको समझ आएगा. हाँ बोलो सर. एलिमेंट कनेक्टिविटी सर एक बार और बोलेंगे? एलिमेंट कौन पूछ रहा है? सर प्रीतम दास. ओके. एलिमेंट कनेक्टिविटी मींस, एक सेकेंड मेरे को, हाँ, दिस इज एलिमेंट E1. अब ये E1 कनेक्ट कैसा किया गया है? क्या E1 1 से 3 कनेक्टेड है या 3 से 1 कनेक्टेड है? Element E3 is connected in which manner? Either you are going from 3 to 4 or you are going from 4 to 3. इसको बोलते हैं एलिमेंट कनेक्टिविटी टेबल. आप रिवर्स कंडीशन में भी जा सकते हो, जैसे अभी प्रीतम ने पूछा कि सर आप हमेशा फॉरवर्ड मोशन ले रहे हैं. दैट मींस फॉर एलिमेंट नंबर 1 कनेक्टिविटी इज 1 to 3, फॉर एलिमेंट नंबर 3 कनेक्टिविटी इज 3 to 4. तो क्या आप रिवर्स ले सकते हैं? दैट मींस फॉर एलिमेंट नंबर 3 कनेक्टिविटी विल बी 4 to 3. हाँ, मैं ले सकता हूँ, लेकिन थ्रू आउट द प्रॉब्लम आपको रिवर्स कंडीशन में लेके सॉल्व करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप इस आधा पार्ट फॉरवर्ड में लेके सॉल्व किए तो बाकी का आधा पार्ट आप रिवर्स में लेके सॉल्व किए, आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा. ओके सर. ठीक है, ओके. ओके. So
लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो काम नहीं है इसका, नहीं क्लोज नहीं करते हैं, काम आ सकता है। वेट, इसको इरेज, okay, let me open the software now. We see ANSYS. In ANSYS, there are two versions available. One is ANSYS Workbench, another one is ANSYS Mechanical APDL. ठीक है, ANSYS Workbench is advanced version, is very much advanced version. Fine. So we will not go in that ANSYS ANSYS Workbench version. We will go with the ANSYS APDL version. And ANSYS APDL version is easy to simulate, to analyze as compared to ANSYS Workbench version. Why? Because easily you can get the tools in ANSYS APDL version. So let us find out where is ANSYS APDL. Can you see here? Mechanical APDL 18.1. Yes, sir. Click on it. Now let us wait for some time to get the software open. सर मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या है इस इसको चलाने के लिए? ये ना तो एक बार ना जीपी सर से पूछ लेना, क्योंकि मैंने जीपी सर से ही लिया था ये सॉफ्टवेयर, तो उनको मतलब पता है पूरा स्पेसिफिकेशन कितना है, और बाकी तुम्हारा कितना हार्ड ड्राइव डिस्क का स्पेस होना चाहिए। सर ने ये 14.15 जीबी का सॉफ्टवेयर है समथिंग, और आपका ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं है लैपटॉप में? है सर, पर ज्यादा नहीं है। हाँ, ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमको दिखाई देगा ना भाई कहाँ पे कितना स्ट्रेस ज्यादा है कितना कम है। 2 GB में भी चलेगा। अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये तुम एक बार जीपी सर से पूछ सकते हो, या जो जैसे प्रीतम यूज कर रहा है उसका कुछ अपना कुछ काम में, तो उसको उनका पूछ लैपटॉप लो। बहुत हाई फाई है सर। चलो, जैसे मेरा जो स्पेसिफिकेशन है, मेरा आपका NVIDIA का जी फोर्स ग्राफिक्स कार्ड जो है वो NVIDIA जी फोर्स का है, उससे चल जाता है। ठीक है, नाउ कैन यू सी, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. This is the entire window of mechanical ANSYS APDL. Fine. Now, this entire window of ANSYS APDL is known as utility menu. दिखाई दे रहा है ऊपर लिखा हुआ एकदम utility menu? Yes, sir. Okay. In utility menu, you can see many options are available. File, select, list, plot, plot controls, work plane, parameters, macro, menu controls, help. Fine. So on the basis of our requirement, we will be watching that, okay, if I click on plot controls, what all thing, many things are there. अगर आप plot controls खोलोगे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, वर्क प्लेन खोलोगे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। हमको हमारे काम से रिलेटेड जो चीज चाहिए, what we will do, we will click on that icon and we will proceed for our work. Fine. क्योंकि अभी अगर मैं बोलूंगा कि इसका क्या फंक्शन है तो आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत सारा है। तो हम लोग प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि किस that this icon menu is having which function and that icon menu is having which function. Fine. Okay. So let us move forward. Can you see these things? This 1, 2, this is this new analysis, open mechanical APDL file. These 7 items, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these 7 items. These are known as standard toolbar. Standard toolbar of ANSYS. Standard, it is written over here also, toolbar. Standard toolbar of ANSYS.
That means these toolbar contains some functions which we will incorporate in our problem from time to time. Fine. Okay. Now, ANSYS understands three terms. That term is pre-processing, preprocessor, pre-processing, solution, post-processor. ANSYS or FEM understand three terms. First term is preprocessor or pre-processing. Second term is solution. Third term is post-processing. What is pre-processing? In pre-processing, you model your entire geometry by giving input of different parameters. आया समझ में क्या होता है प्री प्रोसेसिंग? हेलो, प्री प्रोसेसिंग Yes, का sir. मतलब आपको ज्योमेट्री बनाना है, पहले यहाँ पे ट्रस बनाना है, तो बनाने के प्रोसीजर को बोला जाता है प्री प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या होता है? Once you have drawn your entire geometry with all possible boundary conditions, you click on the solution to get the analysis report of your entire problem. That analysis report can be anything, can be stress, can be strain, can be thermal stress, anything. That is the solution part of the ANSYS. And what is post-processing? This part, that is post-processing. Post-processing means in a particular body, how much stress is acting. In a particular element, how much strain is acting. Which type of strain is acting, which type of stress is acting. That is what you will be doing in this general post-processing step. Is it clear? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को? No, sir. Okay. Now let us start the problem. Fine. Very first step, if I see my question, this is my question. Fine. Very first step is I have to draw the geometry of this question. I have to draw the model. I have to draw the model of this question. Now again, there are many options are there. Either you can make this model in your AutoCAD, Creo, CATIA. You can import in ANSYS, or else in ANSYS itself you can model the structure. Clear? Now, if I minimize, see, can you see here? This is one window and this is second window of ANSYS. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अगर मैं इस विंडो पे क्लिक करूं, मैंने क्लिक किया, तो ये छोटा वाला विंडो खुल गया, आउटपुट विंडो. ठीक है, ये क्या है? ये है आपका प्रोग्राम विंडो. आप यहाँ पे जो भी करोगे, आप इस ANSYS स्क्रीन में इसको प्री प्रोसेसर क्लिक करोगे, फिर कुछ बनाओगे, उसका एक प्रोग्राम है. ठीक है, वो आपको याद करने का जरूरत नहीं है, अपने आप वो इनबिल्ट प्रोग्राम है, वो यहाँ पे टाइप होते जाएगा. तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि अभी आपने जो कुछ, मान लो फर्स्ट स्टेप इज एलोकेशन ऑफ नोड्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, वहां यहाँ पे वो क्या करेगा, वो प्रोग्राम दिखाएगा कि उसका प्रोग्राम होता कैसे है. Similarly, next step is you will join the two nodes with a straight line. You will click over here. Fine. But what is that program behind that clicking? That you can see in this output window box. Clear? Yes, sir. Okay. So let us start. So very first step is what I will do in the utility menu. I will select file. Fine. Then I will change the job name. What is my job name? I am dealing with truss. So let us write TRUSS truss _1. Why I am writing _1?
You can solve many problems of truss. Second problem of truss will be truss underscore 2. Third problem of truss will be truss underscore 3. That means all the data will get saved under this job name file. Clear? Yes, sir. Then what I will do, I will click on this icon, that is new log and error files. Keep and make it yes. Why yes? Because while doing the analysis part, if some error comes, then ANSYS will show you that truss underscore 1 file is having some error, you cannot proceed. Then again you have to start, that you have to see that where you have done the error part. So, or else if you make it no, it will not show you. At last, it will not give the result. Fine. Okay. Then click on OK. Now see, in the utility menu at the top side, it is written truss underscore 1. Fine. Next. Next is, again go to the utility menu, select file. Select file, change title. Click on change title. Now give a title to your problem. I am giving the title as analysis of 4-bar truss. Then click on OK. Now you have to see that where this title is located. For that, what you will do is that again in the utility menu, go to plot. Then click on replot. See, here you will see that in this window it will come it as analysis of 4-bar truss. तो इससे आपको ये समझ में आया कि अगर मैं किसी चीज को देखना चाहता हूं कहां पे वो लिखा हुआ है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन होता है रीप्लॉट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने कॉपी में लिखते रहो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? No, sir. ओके, बाकी लोग को समझ में आ रहा है? बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कोई? Yes, sir. Alright. Yes, sir. Okay. Next step, what you can do is that after every 2-3 steps, what you will do, you will click this button called save underscore db. What will happen is that the entire file will get saved, whatever you have done. Or else what can happen is that if after say 10 minutes current is not there, your charging is also not there in the laptop, it will get switched it off and your entire work will not be saved. So after every 2 to 3 process, try to click on this icon save underscore db so that your entire file will be saved. Next I have to, in order to generate this diagram, I have to give the nomenclature. Nomenclature means against this element. This is the element of the truss. Again, in ANSYS, there are some prescribed elements which we can use to make this truss. Now we will be doing that thing. For that, what we will do is that we will click on preprocessor. Click on preprocessor, then element type, then click on add, edit, delete. One dialog box will get open. Now see, no element is defined. For that, what I will do, I will click on add. If you click on add, this library of element type dialog box will open. Now see, library of element types. Different names of elements are given. We have to choose the proper element for my purpose. Since I am doing the analysis of truss, so truss will be made up of link, beam, pipe, solid, shell, what? Many options are there. बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक करूंगा? कौन सा ऑप्शन क्लिक करूंगा? Sir, link. Link. Truss is made up of link.
सो क्लिक ऑन लिंक। अगर यहाँ मान लो अगर मैं यहाँ पे मैं बीम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता तो क्या मैं लिंक पे क्लिक करता? बीम अगर पे क्लिक करता। मैं बीम पे क्लिक करता, ठीक है। अगर मान लो मैं थिन सिलेंडर या थिक सिलेंडर का डिजाइन कर रहा होता तो क्या मैं बीम पे क्लिक करता उस टाइम पे? हेलो, क्या मैं बीम पे क्लिक करता? मैं सर बीम पाइप पाइप पे क्लिक क्लिक करता। नहीं करता, मैं ये शेल पे, शेल ओके। शेल सॉलिड शेल इस पे क्लिक करता, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस क्लिक ऑन स्ट्रक्चरल लिंक अगेन। In this ANSYS 18 version, inside link, two options are available: 3D finite STN 180 element and actuator 11 element. Fine. But for this ANSYS 18 version, this 3D finite STN 180 element will not work for truss. So I will choose actuator 11. अब हो सकता है कि आपके पास एनसिस 15 वर्जन हो या किसी के पास एनसिस 14 वर्जन हो, तो लिंक में उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपको हर एक ऑप्शंस पे चेक करके देखना पड़ेगा कि आपका वो ऑप्शंस ट्रस को मॉडल करने के काम में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बार करके देखा था 3D फाइनाइट एसटीएन 180, तो उससे एरर आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि दैट एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर ट्रस, ठीक है। सो आई विल चूज एक्चुएटर 11 and see element type reference number is 1. That means all the element of the truss is made up of same actuator 11, so that's why यहाँ पे element 1। या फिर मान लो कोई दो एलिमेंट या कोई तीन एलिमेंट दूसरा किसी एलिमेंट का बना हुआ होता, यहाँ पे अगर ऑप्शन होता, ठीक है, तो मैं उसको चूज करता, फिर यहाँ पे मेरे को 2 लिखना पड़ता, ठीक है। देन आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ सी इन दिस एलिमेंट टाइप डायलॉग बॉक्स that type 1 link has been added, ठीक है। मतलब आपके मेमोरी में स्टोर हो चुका है वो एलिमेंट। कोई डाउट है यहां तक? No, sir. ओके, नाउ क्लोज इट, डन। नेक्स्ट, in the main menu select preprocessor, minimize it, preprocessor, then real constant. What is the function of real constant in ANSYS? Now I will tell you. Then click on add, edit, delete. See, nothing has been added. So click on add. Now see that type 1 link 11, which we have taken in the last step. Now it is added. Then click on OK. That means उस particular type 1 लिंक एलिमेंट के लिए क्या रियल कांस्टेंट होगा? रियल कांस्टेंट मींस एरिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। रियल कांस्टेंट सेट नंबर 1। अगर मान लो बोला होता कि इस एलिमेंट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस एलिमेंट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन इसके लिए एक सेट नंबर 1, मान लो इसका और इसका एरिया 1 है, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का एरिया 2 है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक सेट बनेगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दूसरा सेट बनेगा। पहले वाले सेट के लिए एरिया यहाँ पे वेट, क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? हैंग हो गया लग रहा है। सर मेरा भी यही हुआ। अरे मैं तुम लोग को समझा रहा था ना, इसलिए अगर वो डायरेक्ट क्लिक करता तो वो उतना हैंग नहीं होता। ठीक है, फिर शुरू से इसको शुरू से फिर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं शुरू से तो नहीं करूंगा, मैं इसी स्टेप पे आऊंगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला जितना मैंने किया है वो अभी फिर से रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ पे वो शो भी नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया? Wait.
Okay. Close all windows. Fine. Wait. Just a minute. Okay. Then I will click on real constant, add, edit, delete, add. Okay. Fine. Can you see? Hello. Yes, sir. Fine. So this is real constant set number one. If I told if if two elements are of different area, then your set number will change. Say out of four elements, two elements are having area of 1 centimeter square. Second element is having an area of first and second element is having an area of 1 centimeter square. Third and fourth element is having an area of 2 centimeter square. Then for first and second element, real constant set number one, you have to put the area, you have to apply. For second set number, which is nothing but element number 3 and 4, you have to put the area 2 centimeter square, then you have to click OK. आया समझ में? Hello. Hello. Yes, sir. ठीक है. And in this dialog box, real constant set number one for link 11 dialog box, this stiffness K represent area. Stiffness K represent area. Fine. Now, before writing this area, okay, let me write this area first. 1 centimeter square, so I will write it as 1 and I will click on OK. See, set 1 has been, आपने इसको सेट कर दिया है. Now click on close. Fine. Now you have to set units. Before solving, you have to set units. How to set units? For that, this is what? This is your command window. इसको command window बोलते हैं. यहाँ पे write /units units, comma. If you want to write units in SI, you will write SI, then enter. तो अब ये जो फिगर है, कौन सा वाला फिगर? this box. If you open this dialog box, see, जैसे ही आपने एंटर किया कमांड /units, SI, सी यहाँ पे दिखा देगा आपको लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन. तो अभी ये डिफॉल्ट ले लेगा. अभी आपको खाली टाइप करना है न्यूमेरिक वैल्यू, वो डिफॉल्ट ले लेगा कि SI सिस्टम में क्या होगा, CGS सिस्टम में क्या होगा. तो ऐसे आप यूनिट को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, कोई डाउट है? /units, SI for SI unit, enter. CGS for CGS unit, enter likewise. ठीक है, कोई डाउट है किसी को? हेलो.
No, sir. ओके ओके, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट इज अगेन आई विल गो टू मेन मेन्यू, उसको सब मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज मेन मेन्यू, सेलेक्ट प्री प्रोसेसर, material properties, then click on material models. Since we are solving everything for structural analysis, we are doing, you can do many things, you can do thermal analysis, structural analysis, electromagnetic analysis, acoustics analysis related to sound, fluid analysis, everything. We are interested in which analysis? We are interested in which analysis? Structure. Structural. So click on, क्या हो गया, हैंग क्यों हो जा रहा है बार बार? ओके, so click on structural, then which option, linear, non-linear? Sir, linear. Linear, because we are solving for, there is no non-linear geometry in my problem, so linear. Then elastic in nature. Then in elastic again 3 options are available: isotropic, orthotropic, and isotropic. Which option I will choose? Isotropic. Isotropic. Why? Because value of E, Young's modulus, is same in all the directions. It is given in the problem. If different values of E was given in the problem, then I would not have went for isotropic. Then I would have I would have went for orthotropic or anisotropic. So I will click on isotropic. Fine. Now you can see one dialog box get opened, that is linear isotropic properties for material number 1. You are having 3 options: temperature, Ex, PRXY. Since we are not dealing with temperature, we will not write anything in temperature. What is Ex? Ex is the modulus of elasticity of the problem. What is given to me? Modulus of elasticity is 2 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square. Let us write over here. That is, yes, 2 into 10 to the power 6 is written by E, 6. 2 into 10 to the power 6, that in FEM we write by 2 small e6 or 2 capital E6. If the value was 2 into 10 to the power 8, then I will write it as 2 small e8 or 2 capital E8. Clear? Yes, sir. And Poisson's ratio is not given to me in the PRXY, is nothing but Poisson's ratio. Since it is not given to me in the problem, so I will write it as 0. Then I will click on OK. Close. आपने अपने प्रॉब्लम Why का we are not applying temperature over here? Because it is क्वेश्चन में तो ये बोला नहीं गया कि मैं एक एंड को हीट कर रहा हूँ तो टेम्परेचर के बारे में बताओ कि क्या हो रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला हो तो मैं environment तो है ना? क्या चीज? सर environment तो होगा, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हाँ, एनवायरनमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट को नहीं लिया है, अगर लूंगा तो मेरे को वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। So next what we will do is that is done. Now I will model my geometry. मैंने E दे दिया, क्वेश्चन में प्रॉब्लम का कितना E होगा मैंने डाल दिया, म्यू कितना होगा डाल दिया, मैंने एरिया कितना होगा मैंने डाल दिया। Next I will model the problem. How I will model? Preprocessor, then click on modeling, then click on create. Then how you can create the model? बोलो कैसे करोगे मॉडल क्रिएट? सर नोट से। Yes, because if you see your question, you know the nodal points coordinate values, so you can model your figure by the help of nodes. आया समझ में? Yes, sir. So click on nodes again, then in nodes
There are many options are available, but I will click on inactive coordinate system or global coordinate system. This active coordinate system is nothing but global coordinate system. Fine. Now you can see this dialog box is opened. Create nodes in active coordinate system. Fine. Now I have to write. First is what? See, this is node number 1 and coordinate value is 0,0. Let us write. बार बार यही प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ गया. Node number 1, x is 0, y 0, z 0. क्लिक ऑन अप्लाई. ओके कर दोगे तो वहां पे कर्सर छोड़ देगा. अप्लाई करना तो मेरा खत्म नहीं हुआ है. क्लिक ऑन अप्लाई. देन नोड नंबर 2, लेट अस चेक द वैल्यूज. क्या है वैल्यूज? फॉर नोड 2 x कोऑर्डिनेट 100, y कोऑर्डिनेट 0. So for node 2 x coordinate 100, y coordinate 0, z coordinate 0. Apply. Similarly for node 3 x is 50, y is 50. So right here node 3 x is 50, y is 50. Again apply. Then nodal point 4, your x coordinate is 200, y coordinate is 100. So x coordinate is 200, y coordinate is 100. Now you will click on OK. खत्म हो गया आपका प्रॉब्लम. Okay. Can you see the 4 nodes? Node 1 is 0, 0. It is on the origin. Node 2, node 3, node 4. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और जब आप जमा करोगे आपका फाइनल असाइनमेंट, तो कैसे जमा करोगे? इसका आप एक स्क्रीनशॉट लोगे या और आप कलर प्रिंट आउट करोगे एवरी टाइम. कलर, क्योंकि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सा नोडल पॉइंट है किस बात. एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ योर फाइल, ऑलवेज यू विल टेक आउट द कलर्ड प्रिंट आउट. ठीक है? फिर इतना हो गया, फिर तुम वहां पे क्लिक कर दोगे सेव अंडरस्कोर डीबी वाला जो ऑप्शन है, तो इतना क्वेश्चन सेव हो जाएगा. फाइन. ओके. Now I have to join these elements, these nodal points 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 4. Then only my diagram will be complete. Let us join. For that, what we will do? Okay. Let us minimize each and everything. Now in the utility menu, this is my utility menu. Click on plot controls. Click on plot controls, then click on numbering. Numbering पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. दैट इज प्लॉट नंबरिंग कंट्रोल डायलॉग बॉक्स. ठीक है? अब इसमें आप क्या करो, नोड नंबर्स को ऑन कर दो. नोड नंबर्स को ऑन क्यों किया? तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि आगे जाकर अगर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा नोड नंबर क्या है, कौन सा नोड नंबर 1 है, कौन सा नोड नंबर 2 है, कौन सा नोड नंबर 3 है, कौन सा नोड नंबर 4 है. क्योंकि आगे जाके मान लो अगर मैं 25 एलिमेंट ट्रस को डिजाइन कर रहा हूं, तो उस केस में तो मुझे पता चलना चाहिए ना कहां पे 25th नोडल पॉइंट है, कहां पे 24th नोडल पॉइंट है, एंड सो ऑन. तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ऑन द नोड नंबर एंड दिस एलिमेंट ऑब्लिक एट्रीब्यूट नंबरिंग. ये क्या करेगा? अगर आप इसको एलिमेंट नंबर कर दोगे तो हर एक एलिमेंट जब आप उसको ज्वाइन करोगे नोडल पॉइंट से, उसमें भी दिखा देगा कि हाँ दिस इज एलिमेंट नंबर 1 ज्वाइनिंग नोड 1 एंड 2, दिस इज एलिमेंट नंबर 2 ज्वाइनिंग नोड 3 एंड 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट नंबर कर दिया. एंड दिस नंबरिंग शोन विथ कलर्स एंड नंबर्स, कलर्स ओनली, नंबर्स ओनली, नो कलर्स एंड नंबर्स. तो बोलो क्या करना चाहिए मेरे को यहाँ पे? सर कलर्स एंड नंबर्स. कलर्स एंड नंबर्स. तो इससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट अलग अलग कलर अलग अलग नंबर से शो होगा. तो उससे क्या होगा, मेरा एनालिसिस इजी हो जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगा. फाइन. सो आई विल ऐड ऑन कलर्स एंड नंबर्स.
फाइन, देन क्लिक ऑन ओके, हो गया। अब गो टू मेन मेन्यू, पहले मिनिमाइज करो, बहुत सारा चीज खुल गया है। ओके, गो टू मेन मेन्यू, प्री प्रोसेसर, मॉडलिंग, create. Now click on element. Why element? Because now you have to create element between the nodes. Click on elements, then many options are there, but I will click on this auto numbered. Click on auto numbered, then click on through nodes. Through nodes means जो एलिमेंट आपका डिफाइन होगा वो कौन कौन से नोड से पास होगा। तो मैं जानता हूं कि एक एलिमेंट मेरा पास होगा नोड 1 एंड नोड 3 से। फाइन, मैंने नोड 1 पे क्लिक किया, नोड 3 पे क्लिक किया एंड आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। देखो ज्वाइन हो गया। सेकेंड, मैं डायग्राम देख के ये बोल पा रहा हूं कि सेकेंड जो मेरा एलिमेंट ज्वाइन होगा वो नोड 2 से नोड 3 के भी ज्वाइन होगा। तो आई विल क्लिक ऑन नोड 2, I will click on node 3 and then apply। देखो दूसरा कलर से हो गया। अगर मैं वहां पे कलर वाला ऑप्शन क्लिक नहीं करता, अगर नो कलर करता, तो एक ही कलर से पूरा एलिमेंट ज्वाइन हो जाता, आगे जाके मेरे को दिक्कत कर सकता था। यहाँ पे तो प्रॉब्लम इजी है, अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ट्रस्ट का तो वहां पे दिक्कत कर सकता था। Similarly, I know from the question that node 3 and node 4 also I have to click to join, get this element. So let us join. Click on node 3, node 4, apply. This is that element. Then click on node 2, node 4. Why I am clicking? Because from the question it is clear that this element is joined by clicking node 2 and node 4. Apply, okay, बन गया प्रॉब्लम। क्लियर है? कोई डाउट है इस ज्योमेट्री में किसी को? हेलो? No, sir. No, sir. This is element 1, this is element number 1 joining node 1 and node 3. Element number 2 joining node 2 and node 3. Element number 3 joining node 3 and node 4. Element number 4 connectivity is 2 to 4. Simple, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को नोड 1 एंड नोड 2 को फिक्स करना पड़ेगा इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एज वेल एज नोड 4 पे मुझे एक नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा -1000 न्यूटन। देन ओनली माय डायग्राम विल बी कंप्लीट। लेट अस डू इट। सो अगेन आई विल गो टू मेन मेन्यू, then select preprocessor, then I will select on loads, then define loads, then apply, click on apply. Then I am dealing with structural part, so I will click on structural. Now see, first let us fix node 1 and node 2. Since node 1 and node 2 will not move according to question, displacement is 0, so I will click on displacement. Then I will click on nodes, because I am fixing the nodes, so I will click on nodes. If I am fixing the line, I will click on the line. If I am fixing the area, I will click on area. So here I will click on nodes. Now according to the question, which node is fixed? Node number 1 and node number 2 is fixed. So let us click on node number 1. Let us click on node number 2. Apply. Once you click on apply, see one dialog box will open. Apply U, ROT on nodes. U means displacement, ROT means rotation of the node. And see in lab 2 degree of freedom to be constant. देखो बहुत सारा ऑप्शन है। All degree of freedom UX means displacement along x axis, UY displacement along y axis, UZ displacement along z axis, VELX मतलब velocity along x axis and so on. तो मैं क्या क्लिक करूंगा इसमें? इतने ऑप्शंस में से मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक करूंगा? इतने ऑप्शंस में से मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक करूंगा? नोड 1 एंड नोड 2 फिक्स है। फिक्स है मतलब
किसी भी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता है। अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है तो विच ऑप्शन आई विल सेलेक्ट? Which option I will select? Hello. Yes, sir. Which option I will select? All degree of freedom. If you select all degree of freedom means that particular node 1 and that particular node 2 will not move neither in X nor in Y nor in Z. Fine. Apply as. Many options are there. Constant value, existing table, new table, fixed to current. No, constant value. I want a constant value of displacement. So keep it at constant value. Click on OK. अब आप देख सकते हो नोड 1 और नोड 2 आपका फिक्स हो गया है। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हो गया ना फिक्स? तो फिर से आप सेव कर लोगे, यहां तक जो काम किया है आपने आप सेव कर लोगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, जैसे जैसे डायग्राम चेंज होगा तब तो जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ पहला स्टेप आपका ये था, दूसरा स्टेप आपका ये था। दैट मींस जब आप जमा करोगे इसका जो सॉल्यूशन बना के, हर एक एनालिसिस का प्रॉब्लम आपको एटलीस्ट 20 to 25 पेजेस जमा करने पड़ेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशंस के लिए आप उसका क्या बोलते हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट आप ले सकते हो, बट जो ग्राफिक्स पार्ट है, जहां पे ग्राफिक्स पार्ट आएगा वहां पे आपको कलर प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। Next is I need to apply load at node number 4. I need to apply load at node number 4. Let us apply. For that, let us minimize each and everything. Then it will be clear to you how I am applying. Okay. Then what I will do? Again, I will go to preprocessor. Click on loads. Then define loads. Apply. Structural. Then I will click on force oblique moment because I have to apply a negative force in y direction at node point 4. Force oblique moment. Then click on nodes because I am applying it on nodes, so I will click it on nodes. On nodes. ठीक है, अब कौन से नोड पे अप्लाई करना है मुझे? फोर्स -1000 न्यूटन Sir, 4. फोर्थ नोड पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्थ नोड पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे। तो मैं क्या करूंगा, नोड 4 को क्लिक करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। नाउ सी दिस डायलॉग बॉक्स विल ओपन इन दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेनी ऑप्शंस आर देयर, fx, fy, fz. व्हिच ऑप्शन आई विल चूज? FY. fy I will choose. Then apply as constant value, existing table, new table. Which option I will choose? Constant value. Constant value I am applying. Okay, now here this in this box what you need to do, you need to apply the magnitude of force. What is the magnitude? -1 kilonewton, that is the negative y direction, so -1 kilonewton means -1000 newton. Then click on apply. Okay, can you see at the nodal point 4 we have applied force along negative y direction? Yes, sir. फाइन, ओके। इसका फिर से एक आपको लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट। फाइन, ओके। नाउ माय मॉडलिंग इज कंप्लीट। नाउ my modeling is complete. Now I will solve the problem. Let us solve. Before solving, let me check. Want to check that whether I have drawn my entire geometry correctly or not. For that, how I will check? Go to utility menu, then select list, then select nodes. Fine. Then click, this dialog box will get open. Click on OK. See, there are total 4 nodes in the problem.
here also it has been showing there are total 4 nodes और देखो हर एक नोड का कोऑर्डिनेट दिखा रहा है x0 y0 z0 for nodal point 2 x is 100 y0 z0 तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मैंने जो डायग्राम बनाया है दैट इज करेक्ट डायग्राम ये जो nlist कमांड वाला जो विंडो है व्हाट इट इज शोइंग यू द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी नोड और जो कि मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है इज इट क्लियर तो ऐसे आप देख सकते हैं कोई डाउट है किसी को No, sir. okay then next what you will do again utility menu select list click on elements then nodes plus attributes list elements how element is defined that also we need to see click on node plus attribute देखो element number 1 material is 1 material means all the element is made up of same e same modulus of elasticity so that's why see everywhere material is 1 अगर मान लो एक मटेरियल स्टील का होता दूसरा मटेरियल कॉपर का होता दोनों का ई अलग अलग होता तो यहाँ पे चेंज हो जाता मटेरियल 1 इज मटेरियल टाइप इज 1 एलिमेंट 2 का मटेरियल टाइप 2 एलिमेंट 3 का मटेरियल टाइप 3 क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल सो एवरीथिंग इज सेम फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड देखो यहाँ पे नोड कनेक्टिविटी भी दिखा रहा है फॉर एलिमेंट नंबर 1 नोड कनेक्टिविटी इज 1 to 3 for element number 2 node connectivity is 2 to 3 for element number 4 node connectivity is 2 to 4 and so on clear कोई doubt okay now let us check ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है नोड 4 पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं है देखते हैं ये कैसे चेक कर पाएंगे इसके लिए अगेन गो टू यूटिलिटी मेन्यू select list then click on loads then degree of freedom constant on all nodes ये क्या बता रहा है आपको कि हमने क्या किया था नोड 1 और नोड 2 को फिक्स किया था दैट मींस ux uy uz 0 होगा ये देखो यहाँ पे बता रहा है ux uy uz for node 1 and node 2 is 0 real value is also 0 imaginary value is also 0 that means मैंने करेक्ट बनाया है मेरा डायग्राम ठीक है नेक्स्ट अब इस लोड के बारे में चेक करते हैं उसके लिए अगेन गो टू लिस्ट लोड्स क्लिक ऑन फोर्सेस देन ऑन ऑल नोड्स ठीक है देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नोड 4 पे एक लोड लगा हुआ है कौन सा लोड है y डायरेक्शन में Fy लोड लगा हुआ है कितना लगा हुआ है -1000 न्यूटन देखो दिखाई मतलब मैंने सब चीज सही किया है कोई चीज गलत नहीं है तो इसको अब क्लोज कर दो क्लियर कोई डाउट किसी को No, sir. okay next No, sir. next step is now we have to solve the problem तो उसके लिए क्या करेंगे जस्ट क्लिक ऑन फिनिश किया फिनिश करने के बाद देन अगेन इन द मेन मेन्यू क्लिक ऑन सॉल्यूशन देन क्लिक ऑन सॉल्व then two options are there current local solution from local solution files we haven't taken anything from the files any other files so we will click on current local solution तो आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा ठीक है अब इसको जब आप ओके करोगे इसको जब आप ओके करोगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है एक ऑप्शन की सॉल्यूशन इज डन अगर मैंने कुछ गलती किया होता तो यहाँ पे दिखाता कि कुछ एरर होता तो फिर आपको शुरू से देखना पड़ता कि कहाँ पे आपने गलती किया है अगर सॉल्यूशन इज डन दिखा दिया दैट मीन्स my modeling is correct I got the result clear कोई doubt No, sir. click on close and close now I have to see due to application of this load how much my truss member has deflected कैसे करेंगे उसको कैसे देखेंगे उसके लिए click in the main menu now go to general post processing में आपको दिखता है एनालिसिस पार्ट
कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, सब दिखेगा जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन पे। क्लिक ऑन जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग, प्लॉट रिजल्ट्स, क्लिक ऑन डिफॉर्म्ड शेप। मुझे देखना है कि कैसा क्या देखना है मुझे, डिफॉर्म्ड शेप कैसा डिफॉर्म हुआ है। क्लिक ऑन डिफॉर्म्ड शेप। अब यहाँ पे ऑप्शंस है, कितना ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आपको खाली डिफॉर्म्ड शेप देखना है। सेकेंड ऑप्शन यू कैन सी डिफॉर्म्ड एज वेल एज अनडिफॉर्म्ड शेप। थर्ड ऑप्शन इज यू कैन सी डिफॉर्म्ड प्लस अनडिफॉर्म्ड एज। कौन सा देखना है आपको, आप बोलो। Sir, deformed shape only. नो अगर डिफॉर्म्ड शेप देखोगे तो लोड अप्लाई करने के बाद कितना डिफॉर्म हुआ आपको खाली वो दिखेगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूं, डिफॉर्म्ड प्लस अनडिफॉर्म्ड, इनिशियली जब लोड अप्लाई नहीं किया गया था तब क्या था ट्रस का स्ट्रक्चर, फाइनली लोड अप्लाई करने के बाद ट्रस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, बेटर रिजल्ट देगा मेरे को। तो क्यों ना मैं सेकंड वाले को चूज करूं, डिफॉर्म्ड प्लस अनडिफॉर्म्ड शेप। क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। देखो दिखाई दे दिया तुमको। ये जो व्हाइट वाला जो डायग्राम है दैट इज द इनिशियल diagram of truss before the application of load P at node point 4. After the application of node P, this is the final condition of the truss. This colored lines truss. कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके फाइन फाइन ओके। तो फिर इसका फिर से आपका खर्चा बढ़ जाएगा, फिर से आपको कलर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब तो डिफॉर्म शेप देख लिया। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितना कितना फोर्स लगा है हर एक मेंबर पे, उसको देख लेते हैं। उसके लिए इन द मेन मेन्यू, जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग, प्लॉट रिजल्ट्स, contour plot, nodal solution। अब नोडल सॉल्यूशन में इफ आई क्लिक ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्यूशन तो मुझे क्या बताएगा, हर एक नोड कितने तरीके से मूव किया। क्लिक करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जेड तो होगा नहीं बिकॉज जेड जीरो है हर एवरी टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम दैट मींस अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आपको डिफॉर्म्ड शेप देखना है या डिफॉर्म्ड शेप विथ अनडिफॉर्म्ड मॉडल देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, Deformed shape with undeformed model. बिल्कुल बिल्कुल फाइन। एंड से हमको देखना है कि एक्स कंपोनेंट मतलब जो एक्स कंपोनेंट है नोड का, हर एक नोड कितना डिस्प्लेस किया। तो क्लिक करते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अप्लाई, ओके। ये देखो दिखाई दे दिया, ये है आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है पूरे एलिमेंट में, ये जो ब्लू एंसिस में जो रेड सिंबल होता है दैट इज डेंजर सिंबल, दैट मींस दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रोन टू फेलियर, जल्दी फेल हो जाएगा। ब्लू सिंबल मतलब लीस्ट फेलियर जोन। देखो ये जो टू दिस एलिमेंट, इन दिस एलिमेंट दिस मच इज ब्लू, दिस मच लाइट ब्लू, इतना लाइट ग्रीन रेड। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट इस एलिमेंट में ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है और कौन सा पॉइंट कम क्रिटिकल पॉइंट है, किस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, किधर पे कम स्ट्रेस लगेगा विद इन द एंटायर एलिमेंट। फाइन। और ये आपका वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक वैल्यू वेरी कर रहा है इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए यहां से लेके यहां तक वैल्यू वेरी कर रहा है, एंड सो ऑन। Similarly, you can get the nodal solution for y component of stress also. Okay, ये आपका y component में दिखा देगा कितना कितना डिस्प्लेस हुआ, कहाँ पे कौन कौन सा क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इसका वेक्टर सम देखना है, अंडर रूट x component square displacement plus under root plus y component square displacement, click on displacement vector sum,
क्लिक ऑन ओके। ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा ईच एंड एवरी नोड का। डेफिनेटली नोड 1 एंड नोड 2 0 है तो ये तो मूव नहीं करेगा, तो बाकी एलिमेंट मूव करेगा। और एलिमेंट विद इन द एलिमेंट भी कैसे कैसे मूव किया ये सब दिखा रहा है आपको, देखो। क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। ओके 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 फाइन। तो ये सब मेरा सॉल्यूशन है, मेरा प्रॉब्लम 1 का ये सब सॉल्यूशन है जो भी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका हर एक मेंबर पे कितना कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ, और हर एक मेंबर टेंसाइल नेचर का है कि कंप्रेसिव नेचर का है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड P, एंड व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स, दिस R1 एंड दिस R2। ये जो रिएक्शन जो यहाँ पे था ना, मैंने यहाँ पे इसको सपोर्ट करके रखा हुआ था ग्राउंड से, कितना रिएक्शन दे रहा है ग्राउंड इस पूरे ट्रस को, ये देखना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल क्लिक ऑन main menu, general post processing, then list results, then list results के बाद let us go for nodal solution, then degree of freedom solution, fine, then say x component, click on OK। तो यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगा, x मतलब हर एक नोड का x कंपोनेंट कितना डिस्प्लेस किया, ये आप निकाल सकते हो, ये आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। और ये भी बताएगा कि कौन सा नोड मैक्सिमम डिस्प्लेस किया अलोंग x डायरेक्शन, दैट इज नोड नंबर 4। सिमिलरली अगेन y कंपोनेंट, ये आपको y कंपोनेंट में दिखा देगा कि ईच एंड एवरी नोड अलोंग y एक्सिस कितना डिस्प्लेस किया। सिमिलरली नोडल सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम, ओके। ओवरऑल ux is displacement along x axis for node number 1, uy displacement along y axis, uz displacement along z axis, and u sum is vector sum under root ux square plus uy square plus uz square। डेफिनेटली नोड 1 एंड नोड 2 पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो 0 0 0 है। नोड 3 एंड नोड 4 पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए आपको रिजल्टेंट कुछ मिल रहा है इससे। तो इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हो इसका, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अटैच कर सकते हो अपने फाइल के साथ। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे आप देख सकते हो रिजल्ट। अभी मैंने बोला ये आपका ग्राफिक्स पार्ट था रिजल्ट का, और वो आपका टेबुलेशन पार्ट था रिजल्ट का, जो मैंने अभी बताया लिस्ट रिजल्ट में जाके आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके ओके। अब हम लोड का देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज दैट in the main menu general post processing, then list results, then say I'm interested in reaction solution means ये जो नोडल पॉइंट 1 एंड नोडल पॉइंट 2 था ग्राउंड के साथ फिक्स था, तो ग्राउंड नोड 2 और नोड 1 पे कुछ रिएक्शन देगा अलोंग x डायरेक्शन एंड अलोंग y डायरेक्शन। What is that reaction that I am interested in? For that, list results, reaction solution. This window will get open. Here I will click in all items. जितना possible reaction है नोड 1 और नोड 2 पे लग रहा है सब दे देगा, तो I will click on all items, apply, okay। ये देखो दिखा दिया। नोड 1 पे x डायरेक्शन पे यहाँ पे आपने फिक्स किया था जो ग्राउंड है, ग्राउंड नोड 1 को x डायरेक्शन में -1000 न्यूटन का लोड दे रहा है, y डायरेक्शन पे -1000 न्यूटन का लोड दे रहा है। ग्राउंड नोड 2 को x डायरेक्शन में +1000 न्यूटन का लोड दे रहा है, y डायरेक्शन में 2000 न्यूटन का लोड दे रहा है, और z तो 0 ही है। ऐसे आप निकाल सकते हो। क्लियर है? इसको फिर आप मैनुअली कैलकुलेट करके देखोगे कि आंसर सेम आ रहा है कि वेरी कर रहा है, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है? कोई डाउट है? Okay. Now let us find out the member forces. We have now 15 minutes left. So let us find out how much load
will be exerted by each member of the truss and whether that member is in tension or in compression. In that, what we will do, let us minimize each and everything. Fine. Main menu, general post processing, element table, that is element table. Click on define table. Click on define table. See, nothing has been defined कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप निकालना चाहते हो फोर्स. ठीक है, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा. फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड करने के बाद यू कैन सी दिस डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन. डिफाइन एडिशनल एलिमेंट आइटम्स डायलॉग बॉक्स. फाइन. In this dialog box, that is user level for item, in this dialog box here I am interested in member forces. How much force will be exerted by all the members? So here I will write mem force, M in caps. This is the command MEM, mem, FORCE, mem force. Fine. And in this item comparison result data, here you click on sequence number. And in the sequence number, there are many options are available. Just click on SMISC, comma, here you write 1. Why 1? Because all the members are made up of same material. If all the members are made up of different material, then for one material, I would have write SMISC 1. For second material, I would have write SMISC 2 and so on. Fine. And then click on OK. देखो यहाँ पे आ गया, उसने ले लिया वो डेटा. देन क्लिक ऑन क्लोज. अब जैसे ही क्लोज कर दोगे, अब आपको देखना है. तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन द मेन मेन्यू, general post processing, click on element table, then click on plot element table. Then on this contour plot of element table dialog box, here it is written mem force. Already I have defined. I want to see mem force. Fine. Now you want to see the member forces in following manner. You want to see the average force that is acting on each and every member, or you don't want average. You want the exact value. Which value you want? Sir, I think average value we should go for, because for the simplicity of the calculation. Calculation simplicity के लिए average value. But if you are a design engineer, if you are a finite element modeling engineer, you are interested in the detailed analysis of the structure. So why not go for the entire value? That means without taking the average. Let us take. You can take average also. Fine. So let us take this one, not taking any average, and then click on apply. Click on OK. See, you have got. In each and every member is subjected to this force. See, this member is of blue color line, it is subjected to this force. Red color line subjected to this force. Clear है? ठीक है? Yes, sir. Next is now these force. ये तो आपको ग्राफिक्स में दिखा रहा है, ग्राफिक में. ठीक है. नाउ यू वांट अ टेबल में दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का कितना कितना फोर्स होगा. तो टेबल में दिखाने के लिए व्हाट वी विल डू इज जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग, क्लिक ऑन एलिमेंट टेबल. कहाँ है एलिमेंट टेबल? हाँ, एलिमेंट टेबल. देन क्लिक ऑन लिस्ट एलिमेंट टेबल. List element table will generate the table. Then click on memforce. See, only I will select this item 1. Why? Because for all the members material is same. Item 1 to 10 group 1. Fine. And then click on apply. Click on OK. देखो मिल गया आपको. There are total 4 elements are there. Element 1, this is the force. कितना force exert करेगा? Element 2 will exert this much amount of force in Newton.
That means element 1 is a tensile force member, element 2 is a compressive force member, element 3 is a tensile force member, element 4 is a compressive force member. These things you have to write in the conclusion part of your lab report. कौन सा एलिमेंट पे कितना फोर्स लगा और वो टेंशन में है कि कंप्रेशन में. With this we have completed our first लैब असाइनमेंट प्रॉब्लम. क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट तो होगा, आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा. फिलहाल मैंने जो बोला, किसी को कोई डाउट? हेलो? नो सर. ठीक है, ओके देन मैं यहाँ पे ही फिर लेक्चर एंड करता हूँ. नेक्स्ट वीक आई विल नॉट बी अवेलेबल. नेक्स्ट वीक Sudipto sir will take the manual design class. Manually means he will give you a complicated problem, how to design that problem. I told you that in this lab class we are having two groups. One group is the software part, second group is the manual part that he will discuss. सर मैनुअल पार्ट में क्या न्यूमेरिकल्स होगा? मतलब theoretical जैसा है? हाँ एकदम. लेकिन उसमें कैसा रहेगा, जैसे मान लो मिक्स्ड प्रॉब्लम रहेगा. मतलब एक मशीन मेंबर में गियर भी रहेगा, शाफ्ट भी रहेगा, बियरिंग भी रहेगा, क्लच भी रहेगा, एवरीथिंग रहेगा. तो कैसे डिजाइन करना है उस टाइप से, मतलब मिक्स कंपोनेंट, सब कंपोनेंट का मिलावट रहेगा एक साथ. ठीक है, कोई डाउट Yes, किसी को? Okay, so if you have not given your attendance, please give your attendance in the chat box. And then after that you can, I am not saving it because save करूंगा तो मेरा बहुत डेटा खा लेगा. ठीक है, with this we completed our truss part. ठीक है, एग्जाम में मैं डायग्राम चेंज कर दूंगा, मैं सेम चीज तो दूंगा नहीं, डायग्राम वगैरह चेंज करके ही दूंगा. आपको तरीका आप पता होना चाहिए कैसे चेंज करना है. मैं ऐसा भी कर सकता हूँ एग्जाम में कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग मटेरियल दे दिया, अलग अलग वैल्यू ऑफ ई दे दिया, हर एक मटेरियल का एरिया भी मैंने अलग अलग दे दिया. थोड़ा सा आपका टास्क थोड़ा और बढ़ जाएगा. तो ये सब मैं कर सकता हूँ एग्जाम में. ठीक है, बाकी प्रोसीजर तो इस टाइप का ही रहेगा. फाइन. और आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आप नेट पे देखो, आपको इस टाइप का और एनालिसिस मिल जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस ट्रस का. अभी क्योंकि आप लोग नए हो, आप लोग अभी सीख रहे हो, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. मैं ताकि आप लोग सीखो, आपको समझ में आए कि होता क्या है ये सॉफ्टवेयर, कैसे काम कैसे करता है, इसलिए मैं सिंपल थिंग्स आपको करा रहा हूँ. क्योंकि फायदा नहीं, अभी मैं करा दूंगा कॉम्प्लिकेटेड, सब बाउंसर जाएगा ऊपर से, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. तो ठीक है, तो with this I am ending